Chalaji, Assalamu alaikum, everybody. It's a really a pleasure to be present in front of all of you and talk about a bit of design thinking and innovation and how HBL Bank we are implementing it. So I'm very happy to see all of you जो कि अभी ये study भी कर रहे हैं. मेरे को this is great that a great institution like IBA is actually offering this course, masters in this area also. So a bit about myself first, and then we will move to the core of design thinking. Again, I'm as Mumtaz Sahab said that I am actually currently working as head of transformation and process reengineering for HBL Bank in the global operations function. And when I say operations, we're talking about 2/3 of the bank. So almost अगर हमारे 20,000 के करीब लोग हैं, तो कोई 14-15,000 के करीब लोग जो हैं सिर्फ operations के अंदर होते हैं involved. So that's the area that I am looking after, where anything that needs a small process to be incorporated or a big change to be incorporated in operations goes through me, and I have a team which implement that change in the bank. So that's a bit of my current role. My educational background is I'm an engineer by education. I did my bachelor's in mechanical engineering. I did my master's in manufacturing engineering, which is an extension of mechanical engineering. And I did my MBA. And post that recently during COVID, but maze ka time mil gaya, so I have done a lot of certifications from MIT and from HEC Paris around these themes, including design thinking and digital transformation. So ये थोड़ा सा मेरा background है. और now coming to what design thinking is, so I'll break my whole discussion with you in, let's say, in 3 aspects, in 3 sections. और वो पहला section होगा कि हम थोड़ी theory करेंगे, but theory वाली theory होगी जो किताबों वाली theory नहीं है. It is practically that हम इसको लिंक कैसे करते हैं अपने बैंक के अंदर. तो मैं आपको एक एक एलिमेंट को लेके चलूंगा डिजाइन थिंकिंग के हवाले से और इनोवेशन के हवाले से, और उसको हम बैंक में कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. बट आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट के व्हाइल आई एम ऑन एनी टॉपिक और ऑन एनी स्लाइड, प्लीज feel free to interrupt or to ask anything or get any clarification, and we can have a sort of an interactive session rather than just a monologue from my side. तो कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे जितना bother कर सकें उतना अच्छा है. And that is the sign of an inquisitive mind, questioning, asking. So हो सकता है मैं आपको 100% satisfy ना कर सकूं, but ये कि practically जो हम बैंक के अंदर कर रहे हैं चीजें, वहां पे हम जरूर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. So that's one aspect, and then I will come to some of the use cases in the bank where we have applied design thinking concepts to come up with solutions which were not possible otherwise, or which were easier through design thinking. So ये 2 aspects हो गए. तीसरा जो है वो ये है कि जी what are the possibilities, क्योंकि मुझे आप लोगों के इंडिविजुअल बैकग्राउंड्स का नहीं पता है. हो सकता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, मतलब कहीं काम कर रहे हो, या यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, और यू हैव योर ओन बिजनेसेस. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क मी टू हेल्प यू इन डूइंग योर रोल बेटर, based on my experience and my role, I'll be more than happy to assist you. So ये 3 sections में हम divide करेंगे, but तीनों को please आपने interactive रखना है. I hope everybody can hear me properly. Yes or no? Okay, great. Sorry? तो थोड़ा सा यहाँ पे आवाज जो है एको हो रही है, वो आईटी को बुला रही है. Continue. Okay, you want me to wait for a couple of minutes till you fix it? आप कंटिन्यू कर लें, वो कोई ऐसा मसला नहीं, वो आ जाएगी तो थोड़ा और सेट हो जाएगा. We can still hear. All right, चले. I'll start with this basic slide first. That what is design thinking? And it's an interesting question that I'll put in front of all of you.
कि आपके ख्याल में ये डिज़ाइन थिंकिंग जो बहुत ही एक आजकल एक नॉर्म है, हर जगह आप जाएं तो एक बड़ा बज़वर्ड है डिज़ाइन थिंकिंग, एजाइल, इस किस्म के एक्रोनिम्स बड़े आजकल पॉपुलर हैं, बट आप लोग उसको स्टडी भी कर रहे होंगे. So my question to all of you is, in your opinion, what is it? Is it a method? Is it a process, or is it a mindset? Maybe you have an answer for that, but I would like you to think about it in terms of कि ये क्या बला है डिज़ाइन थिंकिंग, एंड प्रैक्टिकल मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये मेथड है, प्रोसेस है, या एक माइंडसेट है. हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एंड आई विल पार्क दिस क्वेश्चन right now so that later when I am trying to conclude it, we can come back to this question and try to address it. What is it? Is it a method? Is it a process or mindset? ये तीन words हैं जो मैं I will leave it with you. So please, if you have some points around it, keep noting those down, or if one of you at least would like to share his or her thought around it, कि आपके ख्याल में method है, process or mindset, I can take one feedback right now, and the remaining we will do it later when we are, trying to close this session. So any volunteer who would like to go ahead first and explain to me in terms of method, process, or mindset. But I guess it is a process because it starts from identifying any problem. First of all, you identify a problem and you go for a solution, and how we pick out a solution. Solution is always a procedural thing. You think of a different alternatives, you choose best out of it, and how you carry it forward. This is a whole process, I guess. Yeah. Thank you. Sorry, आपका नाम? Sorry? Anas, thank you so much for your feedback. Yes, you've highlighted that it is a process. So I will not answer it right now. I will try to answer it in the end, but it's good to get the feedback. So yes, of course, you have highlighted a very important point, process, but इसको हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे कि ये भला है क्या. Now, as simple as, I mean, बहुत सारी definitions आपको मिलेंगी, and around what is design thinking. But the simplest form of for definition which I could come across was this: that it's a systematic approach to identify opportunities and build innovative solutions. मतलब इससे ज़्यादा simple कोई चीज़ नहीं हो सकती है. Systematic approach. So when we say systematic approach, we are talking about process. जैसे अनस आपने कहा, we're talking about a method. And why that approach is required to identify opportunities. So the important point over here is to find out opportunities. It's a plural that have been used over here. So it can't be just one, odd solution. It could be multiple solutions that you can come up with, and in order to build something innovative. So ये keywords हैं in design thinking के एक systematic approach होगा, opportunities होंगी, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस होंगे. ये इसको इनकैप्सुलेट करता है पूरे ओवरऑल प्रोसेस को. एंड आई डोंट थिंक दैट आई कुड फाइंड एनीथिंग सिंपलर देन दिस. मे बी आप लोग को मिल जाए तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, एंड आई बी हैप्पी टू read that or study that or understand that. But when we talk about innovative solutions, when we talk about opportunities, when we talk about systematic approach, तो एक and the word design thinking, तो एक बड़ा रिलेशन आता है जो मैं भी प्रैक्टिकली फेस करता हूँ बहुत अपने बैंक के अंदर भी, और जो भी हम काम अपने मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ करते हैं आउटसाइड द बैंक, कि यार ये तो बड़ा क्रिएटिव काम है, ये तो कोई क्रिएटिव बंदा ही कर सकता है. या आपको भी मेरे ख्याल से अगर आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं एक चैलेंज आता होगा, या इवन इन योर ओन लाइफ, कि यार ये तो बड़ा कोई आर्टिस्टिक किस्म का काम है, कोई क्रिएटिव बंदा होना चाहिए. और एक चीज़ जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि यार इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. एक आर्टिस्ट जो है वो इनबॉर्न होता है, या एक जो वर्ल्ड क्लास एथलीट होता है वो शायद इनबॉर्न होता है. ये चीज़ें भी टैलेंट ज़रूरी है, नेचुरल टैलेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू highlight over here, can creativity be learned? Can you train yourself to be creative? Can you train yourself to be more artistic and full of aesthetic sense and full of innovative ideas? So the answer is yes.
जो ऊपर हमने बात की थी, a systematic approach. So if you follow a systematic approach through practice and through a process, you can learn to be creative. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक आर्टिस्ट ही या एक कोई क्रिएटिव बैकग्राउंड का इंडिविजुअल ही या एक इनोवेटर ही आके आके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बट यू इन योर ओन पोजिशन, हुएवर यू आर, वट एवर यू योर बैकग्राउंड इज, एंड वट एवर योर कोर स्ट्रेंथ ऑफ स्टडीज और जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसमें रहते हुए भी यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू बी मोर क्रिएटिव. इनफैक्ट मैं एक बड़ा मजे का एक कोर्स कर रहा था कुछ अर्से पहले, एंड उसमें मुझे इट वाज फ्रॉम HEC पेरिस, एंड उसमें एक बड़ा कोर्स था ऑन क्रिएटिविटी के ऊपर, द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिएटिविटी, एंड दे एक्सप्लेन्ड इट विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट यू नो कि द मोर कंस्ट्रेंट्स यू हैव, द मोर क्रिएटिव आउटकम वुड बी. अच्छा, और क्रिएटिविटी को जज कौन करेगा? क्रिएटिविटी को जज मैं और आप नहीं करेंगे, यानी कि इनोवेटर नहीं करेगा, वो उसके यूजर्स हैं, वो दूसरे दो लोग हैं जो उसको फीडबैक देंगे कि यार ये काम क्रिएटिव है या नहीं है. सो द टेक अवे फ्रॉम दिस एस्पेक्ट इज, जो मैं आपको केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि डिजाइन थिंकिंग के अंदर जो डिजाइन वाला एलिमेंट है वो सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है. वो एनीबडी कैन डू इट if they follow a certain, or if they certain, you train your mind, train yourself, to come certain through a certain methodology, and the more you do it, the more practice you put into it, the results will always be in your control. So अगर किसी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोई इनोवेटर है, फॉर इंस्टेंस किसी एग्जांपल लें, स्टीव जॉब्स की ले लेते हैं एग्जांपल. ठीक है, स्टीव जॉब्स इज नोन टू कम अप विद सॉल्यूशंस, विद प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इस किस्म की चीजें वो हमेशा करता रहा है. लेकिन उसकी कोई ट्रेनिंग कभी आर्ट, मतलब उसने कोई इस किस्म की चीज तो की नहीं कि उसको ट्रेनिंग में आर्ट या इनोवेशन जो है उसने कहीं पढ़ी हो. बट इट वॉज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड कॉन्स्टेंट फोकस थ्रू अ प्रोसेस. जब आगे आगे बात करेंगे कि ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ and the people around him to come up with solutions which are accepted and considered innovative and creative by the end users, by the general public or through feedback. So अगर मैं कोई चीज़ खुद से बना लूँ और मैं कहूँ यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, but it does not mean that it is going to be a creative solution. The creative solution is when it fulfills the need, when it satisfies the users, and उनके perspective से अगर आप देखेंगे तो it comes out to be क्रिएटिव. जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि जी रिस्ट्रेंट्स, इट इज अ फ्यूल फॉर योर क्रिएटिविटी. रिमेंबर दैट इन योर इन हम जो बैंक में काम करते हैं तो आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती है. बेतहाशा किस्म के रिस्ट्रेंट्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी है तो रिस्ट्रेंट्स भी ज्यादा होते हैं, बट restraints are the things, or these what do you call it, considerations are so important that they bring out the best creative solution out. जितनी किसी भी चीज के डिजाइन के अंदर मैं जितना भी कंस्ट्रेंट्स डाल दूंगा ना, और फिर आपको बोलूंगा कि यार अब आप इसमें से मुझे सोल्यूशन निकाल के दें, then that solution that will come out will be very effective, and this is based on research. इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि मैं अगर आपको बोलूँ एक पोएम लिखें, कोई शायरी करें या कोई नज़म लिखें या पोएम लिखें, तो आपके जहन में आता आप लिख देंगे. ठीक है, अच्छा यही एक्सरसाइज जो है जब एक्सपेरिमेंट के तौर पे एज रिसर्च की गई तो लोगों को कहा कि आप लिखें अपनी कोई भी पोएम है. इसी क्लास को अगर मैं बोलूँ कि आप इंडिविजुअली एवरीबडी यू शुड राइट अ पोएम, everybody will come up with some sort of a theme context. हो सकता है कोई अच्छी भी उसमें से निकल आए. बट अगर मैं आपको यही एक्सरसाइज दूं दोबारा और उसमें बोलूँ कि ठीक है पोएम लिखें, लेकिन अब उसमें ये कंसिडरेशंस रखिएगा कि हर हर स्टैंजा के अंदर, हर वर्ड्स के अंदर जो वर्ड एंड में इस्तेमाल हो रहा हो वो इस लेटर पे ख़त्म हो. हर लाइन के अंदर, हर वर्ड्स के अंदर ये वाले लेटर्स 2 से 3 दफ़ा नहीं इस्तेमाल होने चाहिए. आपके ओवरऑल स्टैंजास जो हैं वो या आपके जो ओवरऑल वर्सेस हैं वो 8 या 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. सो दोज आर द रिस्ट्रेंट्स, और मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ ये काम कंप्लीट करने के लिए, आप लिखें इन 10 minutes. So दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चैलेंज योर माइंड मोर,
बिकॉज अब आप रिस्ट्रेंट्स आ गए हैं और अब आप ज़रा उन रिस्ट्रेंट्स को सोचते हुए फोकस करेंगे। तो ये जो रिस्ट्रेंट्स के साथ काम करना होता है, जितनी प्रैक्टिस आपको होगी उतना ही अच्छा सोल्यूशन हमेशा आप निकाल के दिया करेंगे, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी नोन एज अ गुड solution or problem solver, because you, through a process, you will, with considering all those restraints, you will come up with a solution which is going to be acceptable by the end users and by the जनरली जिसके लिए भी आप काम करें, बाय द कस्टमर्स। सो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और आपसे पूछूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार, इफ यू हैव एनी फीडबैक और कमेंट टू मेक, प्लीज फील फ्री। इफ नॉट, देन आई कैन कंटिन्यू। नथिंग? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। ओके, ऑलराइट। Design thinking, as much as it is about uh, solutioning, it is actually more about problem forming. यानी कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो सबसे पहला काम जो है ना, वो ये होता है कि उस चैलेंज को समझें कि वो प्रॉब्लम है क्या। What is the scope? What is the problem really, talking about? And do you have an understanding of the problem at hand or not? This is the most critical part. In fact, मुझे बड़ी famous quote है जो मैंने सामने भी लगाई है Albert Einstein की। He said, if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes in solutioning it. This is the whole crux about design thinking or problem solving, that पहले आप उस मसले को समझें कि वो है क्या। अब फॉर इंस्टेंस हमारे एक बैंक के अंदर एक कोई मसला आ जाता है कि जी एक सिस्टम है जो हमारे ब्रांच के टेलर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सिस्टम समाउ जो है ना वो एक एरर बार बार दिए जा रहा है, और इन सर्टन सिनेरियोज इट इज नॉट वर्किंग। नाउ वी कैन डायरेक्टली कम टू द सोल्यूशन। अगर मैं किसी एक सिस्टम एनालिस्ट को बैठाता हूँ, वो कहेगा सर आप एक काम करें, बस इसको बाईपास कर दें और इसकी जगह मैं आपको एक नया वो बना देता हूँ, कोड लिख देता हूँ और वो एक नया काम करना शुरू कर देगा। That's also a solution, but that is not what design thinker or a design thinking team would like to approach it. They will try to understand कि यार ये problem है क्या, मतलब is it a user problem, is it a system problem, is it an understanding problem, it is a coding problem, or is it because कि कोई हमने ऐसी तार पीछे लगाना भूल गए हैं सिस्टम की, किसी और सिस्टम के साथ जोड़ना भूल गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। You have to understand the problem first. वो कहते हैं ना ग्रैनुलर लेवल पर जाके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम फॉर्मिंग, इन अदर वर्ड, इज द मेन स्टार्ट और द स्टार्टिंग पॉइंट वे यू डिफाइन यू स्कोप। एक क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं हमेशा डिजाइन थिंकिंग फिलॉसफी के अंदर कि व्हाट माइट वी। So when a team is trying to solve an issue or understand a problem, so they will try to come up with a question, what might we? Yani what might we, or what if we change this, what might happen? So what if, हम ये system eliminate कर दें? So crazy thoughts आती हैं शुरू में, wild ideas होते हैं, but no, those are extremely important to understand an issue at hand. Okay, what might we change in order to address this problem? What might can be changed in order to solve this issue? What might is required or will be required in terms of human resource or in terms of intellect or in terms of technology to address this problem? So ये what might, ये inquisitive mind है ना, ये इस स्टेज पे प्रॉब्लम फॉर्मिंग की स्टेज पे होना बहुत जरूरी है, और उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। And I'll explain it to you कि किस तरीके से। So when we talk about deep dive, when we talk about understanding the state of the issue or the problem forming stage में हम हो, so deep understanding of the user and his or problem is critical. तो एक और वर्ड जो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा अपनी थ्योरी के अंदर और बड़ा बज़वर्ड है कि एम्पैथी फॉर द यूजर, फॉर द कस्टमर, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये मैं आपको रियल सिनेरियो में बताता हूँ कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट।
Okay, for instance, from a bank perspective, if we are trying to address the same issue, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले example दिया था, so you have to go and sit with the teller in the branch, जो user है इसका, उस system का या उस process का, और उसको उसकी आंख से देखना पड़ेगा कि यार उसको दुनिया कैसी नजर आ रही है, उसके क्या मसाइल हैं, what environment he or she is working in, you know, वो मतलब किन हालात में काम कर रहा होता है. I mean, we talk tellers in the bank, we are talking about, you know, almost an individual with a salary range of 20 to 30,000 a month. अब वो किस एस्पेक्ट में किन सिनेरियोज के अंदर काम कर रहा है या कर रही है, with whatever you're trying to communicate to that individual, is it getting communicated or not? Whatever he or she is trying to communicate to you through the system, is it getting communicated or not? Is he or she able to understand what is coming in front of him or her? उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनके नजरिए से दुनिया को देखना, उनके काम को जो भी कर रहे हैं अप्रिशिएट करना. सो दैट एम्पैथी पार्ट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ व्हेन यू से एम्पैथी, हाउ डू यू फाइंड आउट पीपल कि जिनके साथ आपने वो एम्पैथी का एलिमेंट डेवलप करना है. सो इफ आई आस्क यू, ऑल ऑफ यू, अ क्वेश्चन कि लेट्स से you have to solve a problem in your organization. अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, या let's say hypothetical example ले लेते हैं, आप लोग HBL में काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि हमारे 15,000 लोग तो ऑपरेशंस के अंदर हैं, उसमें से कोई 6,000 सिर्फ टेलर्स होंगे. तो अगर मैं उनके साथ एम्पैथी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द वे दैट आई शुड गो अबाउट इट? हाउ डू आई pick individuals, select individuals who with whom as a team we can empathize? Any idea कि वो किस तरह से मैं हैंड पिक करूंगा लोगों को, किस किस्म के ट्रेट्स देखूंगा, नहीं देखूंगा या देखूंगी? Any feedback that you can provide? मतलब कि तीन ग्रुप का कोई एक बंदा और फिर अगले ग्रुप के कोई और बंदा, ताकि आप ज्यादा लोगों का पर्सपेक्टिव ले सकें. थोड़ा सा अगर माइक के करीब आके बोल देंगे तो आई विल बी एबल टू हियर बेटर. आई एम सॉरी. जैसे मैं कह रहा था कि डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग लेंगे, मतलब कि अगर एक ग्रुप से एक बंदा ले लिया तो थोड़ा सा बिल्कुल डाइवर्स बैकग्राउंड कोई दूसरा बंदा ले लिया, ताकि ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव और क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको वो. तो ये जी, आपका नाम? जैन. व्हाट्स योर नेम? जैन. Zain साहब, thank you so much. I think yeah, absolutely. But देखें, okay, now let me give you a practical approach or a tip. Yes, diversified लेना है, लेकिन आप extreme users लेंगे, ठीक है? Diversified से मुराद ये नहीं है कि आपने सारे अच्छे बंदों को ले लिया बस, क्योंकि या किसी को ऐसे उठा लिया जिसने आगे को जवाब ही नहीं देना. So you have to pick the extreme cases. The extreme cases can be on both ends. Somebody who is excellent in using the system, somebody who is not very good in or totally new in understanding the system. So ये दो extreme cases हो गए. Similarly, somebody who is very vocal or who will go and pinpoint. Generally कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा कीड़े निकालते हैं चीजों के अंदर. That's an extreme case. And someone who might be extremely good but is very docile and very down to earth and बिल्कुल ही कोई बोलता नहीं, चुप रहते हैं, उनको उठाएं. So when you pick up extreme cases and ये जो empathy है, let's assume जो ये empathy आपके सामने slide नजर आ रही है, that's a human face. So let's say this is your user. So जो user है उसका persona बनाएं कि यार कि आपका जो user है वो किस टाइप का user होगा generally, और फिर उस persona के against आप extreme cases जो हैं वो आइडेंटिफाई करें. यार इस यूजर को के टाइप के हमारे बैंक के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर, हमारे इदारे के अंदर ये एक्सट्रीम केसेस एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स कि वो जो है कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है सिस्टम के साथ, दे विल गिव मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीडबैक. कुछ है बिल्कुल ही नहीं पता उनको, तो मैं जब भी चीज़ बनाऊंगा दोनों लोगों के लिए बनाऊंगा ना. फिर कुछ होंगे जो हमेशा कीड़े निकालेंगे, उनको कैसे एड्रेस करना है. कुछ होंगे जो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलेंगे. तो मैं ये 3, 4, 5 किस्म के इस किस्म के प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई करूंगा, और उन प्रोफाइल्स के अगेंस्ट मैं कुछ लोगों का एक ब्लॉक बना के या मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना के उनके साथ एम्पैथाइज करूंगा, उनके साथ टाइम गुजारूंगा, ताकि मुझे उनकी फीलिंग्स का पता चल सके कि यार व्हाट इज हैपनिंग in the environment around those people. So
that is one good takeaway. I'm moving forward now. डिजाइन थिंकिंग के एक और मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ. हो सकता है आप लोगों ने स्टडी की हो, आई एम श्योर की होगी, कि यार हर इशू को आप डिजाइन थिंकिंग के अप्रोच के थ्रू ना सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग इस वर्ड को बड़ा मिसयूज करते हैं आजकल. और चूंकि इट्स अ न्यू थिंग, फैशनेबल थिंग है, ग्लैमरस है, यार डिजाइन थिंकिंग हमें करनी चाहिए. तो दुनिया के हर मसाइल डिजाइन थिंकिंग के थ्रू सॉल्व नहीं होते. पहली बात तो ये आप नोट कर लें. Design thinking will be most ineffective if you are trying to solve a problem for a future. मतलब it does not exist now. कि यार पता नहीं आगे 4 साल बाद हमें क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं. Let's try to address it through design thinking. That will be a futile attempt. That's not the approach preferred. So design thinking is primarily for solving issues which exist today, the present. So you have to live in the present. कि आज आपके सामने वो एक प्रॉब्लम है, वो एक रियलिटी है, उसको सॉल्व करना है, फ्यूचर को नहीं सॉल्व करना. फ्यूचर से मुराद क्या हो सकती है? अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है कि अगले 4-5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर वो कंपनी कहाँ पे खड़ी होगी, and I've tried to start using design thinking as an approach, I'll be wasting time, and that's not the right approach to use. बट आज अगर मैं बोलूँ यार मेरी सेल्स इस सेगमेंट के अंदर फॉर इंस्टेंस नहीं बढ़ रही हैं, या मुझे इस ज्योग्राफी के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज एग्जिस्टिंग, उसको मैं अगर डिजाइन थिंकिंग अप्रोच के थ्रू अप्लाई करना चाहूँ तो दैट्स द राइट अप्रोच. सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, हम आगे भी मैं आपसे बात करूंगा कि जहाँ पे डिजाइन थिंकिंग को आप कभी भी एक किसी ऐसे मसले के लिए इस्तेमाल ना करें जो कि वो रिजल्ट नहीं देगा. देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर अप्लाइंग अ डिजाइन थिंकिंग अप्रोच. नंबर 1 कि वो प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट करना चाहिए. दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे वो प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट करना चाहिए, उसी तरीके से वो प्रॉब्लम बड़ा वेगली डिफाइंड प्रॉब्लम होना चाहिए. मतलब जैसे मैंने कहा कि यार मुझे नहीं पता है कि हमारी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर इस पीरियड में. नाउ आई डोंट नो, देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस कि वो नहीं बढ़ रही. इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कोई और प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई और फैक्टर नजर नहीं आ रहा कि हाउ टू गो अबाउट इट. तो जब आपके पास लूजली पैक्ड या वेग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहां पे डिजाइन थिंकिंग की अप्रोच आपको हेल्प करेगी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द आइटरेटिव नेचर ऑफ द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. सो दैट्स वेयर यू विल यूज. तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा. एक होता है ना, हम चूंकि बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब डाटा के ऊपर चल रहे होते हैं. ये डाटा सेज दिस, या तो मैं जिंदगी गुजार दूं उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि पहला डाटा इकट्ठा करो, जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठी करो और डीप रिसर्च करो जाके. तो वो डिजाइन थिंकिंग वहां पे भी फेल हो जाती है. डिजाइन थिंकिंग इज नॉट अबाउट दैट. डिजाइन थिंकिंग इज एक्चुअली अबाउट टू अवॉइड दोस थिंग्स. बेसिक डाटा आपके पास होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां से आपने लेके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इसके अलावा भी 6-7 एलिमेंट्स हैं, बट दीज आर 3-4 critical ones which will filter out that you will probably have to address a problem through a design thinking approach if these conditions exist. It is a living problem, it's a vague problem, does not have substantiated data along with it. ये 3-4 जो आपके एलिमेंट्स अगर ये सामने हों तो फिर उसके बाद आप डिजाइन थिंकिंग को अप्लाई करना शुरू करें. ओके, सो जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जो डेफिनेशन दी थी. Whatever solutions that you come up with in design thinking, and I'm telling you this is all practical, हाँ, मैं ये सारा उस बेस पे कह रहा हूँ कि हम ये सारी चीजें अप्लाइड हैं in organizations. उसकी desirability is the most important part. ठीक है, यहाँ पे फर्क आ जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी ट्रेनिंग किस किस्म की हुई है, आपने वो मेथड और वो प्रोसेस कितनी दफा अप्लाई किया नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, एज बिजनेस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ एज वेल, हम कभी भी डिजायरेबिलिटी को पहले फोकियत नहीं देते, हमेशा वायबिलिटी और फिजिबिलिटी को लेकर आते हैं.
Whereas in design thinking, that desirability of the solution is the most critical thing. That's your first filter. आपने solutions 10 बना लिए, उन 10 solutions में से कौन सा most desired, and that desirability will come from whom? Think about creativity, think about empathy, think about feedback. That desirability will come from your users that do whatever you solutions that you have come up with. Your users, do they really want it? Do they really desire it or not? That is a very important critical factor to consider. uh, Sorry, can you hear me? Yes, please go ahead. Okay. So solution must be desired first, and then comes the viability and the feasibility part. यानी कि viability means कि यार ये सस्टेनेबल भी होगा, मतलब अगर हम कोई बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई बिजनेस चल रहे हैं, तो ये वायबल है, अगले 3 साल तक 4 साल तक चलता भी रहेगा, इसलिए नहीं चलेगा. और दूसरा फिजिबिलिटी कि यार इसको इम्प्लीमेंट जब हम करने जा रहे हैं तो उसमें खर्चा कितना होगा, उसमें फैक्टर्स, उसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होगी, क्या इज इट फाइनेंशियली फिजिबल और नॉट. So these are the things that comes later, but don't get bogged down with a solution based on the feasibility and viability part first. Address the desirability, the user-centric design first, and then we'll talk about viability and feasibility. यहाँ तक चीज क्लियर है? अगर कोई फीडबैक है या कमेंट है, प्लीज फील फ्री. Yeah, I think it's clear. Same question. Okay, wonderful. There is a question. Okay, Please. जी प्लीज गो अहेड. डिजायरेबिलिटी के फैक्टर में क्या एनवायरनमेंट का रोल प्ले नहीं करता? Because whatever बिल्कुल करता है. whatever you may desire, but eventually if it works, वो तो जी बात बिल्कुल. सॉरी, मैं आपका लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुन सका तरीके से. अगर माइक के करीब आ जाए प्लीज. मैं कह रहा हूँ कि desirability you can envision whatever you want, but if the environment is against it, वो उसको implement करना तो फिर तो वो है ना कि वो ये practically implementable है भी या नहीं. जी बिल्कुल. देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फर्स्ट यू विल फिल्टर your solutions based on desirability factors. So let's say you come up with 10 possible solutions. जो आगे मैं बात करूंगा कि iterative approach जो है वो क्या होती है, अगली स्लाइड इसी के बारे में थी. एंड वहां पे आप let's say you come up with 10 solutions, possible solutions. उन 10 में से आपने फिल्टर पैरा लगाना है कि यार what are the most desirable ones. So you'll take those out which are not desired at all. Once you have filtered based on desirability, let's say you come up with 3-4 desired solutions which are acceptable to users, then you will come up with parts कि यार इनकी viability और इनकी feasibility क्या है, आपकी environment का क्या impact है उस पर या नहीं है. By the way, जब आप desirability को filter कर रहे होंगे, उस पर यूजर अपने जो आपको फीडबैक दे रहा होगा वो अपनी environment को मद्देनजर रखते हुए दे रहा होगा, और ये उस वक्त होगा जब आपके पास यूजर्स सही सिलेक्ट हुए में होंगे. और यूजर्स कैसे सही सिलेक्ट होंगे, जो मैं आपको फॉर्मूला दिया था कि आप एक्सट्रीम यूजर्स उठाएं. So when you have extreme people, giving you feedback and they are confiding or they are, endorsing that, these are the desirable solutions, that itself will give you the confidence कि यार इसमें environment का impact कुछ हद तक शामिल है. अब आ जाता है कि यार कोई ऐसा solution हो सकता है कि जी आपने कहा कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई वाज स्टडीइंग अ केस स्टडी. एक दुनिया की बड़ी मशहूर कंपनी है IDEO. आई एम श्योर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा. दैट कंपनी इज नोन टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट फर्म व्हिच कम्स अप विद इनोवेटिव आइडियाज. यानी कि जैसे कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं ना, उस तरह की होती है. तो उनके पास एक केस आया, एक स्टडी आई एक दफ़ा कि यार पुलिस की सिक्योरिटी के लिए उनको कोई सोल्यूशन चाहिए. अब टोटल पीपल जो उनकी पुलिस है, जब वो किसी को इंटेरोगेट करती है या सड़क में पकड़ती है या कुछ करती है, तो दे फील इनसिक्योर एंड दे कांट सेंस कि यार ये इंडिविजुअल जो दूसरा है वो क्या वाकई उसके ऊपर अटैक करेगा नहीं करेगा. तो उनके पास कोई गेज नहीं होता है, एंड समटाइम्स दे टेक रॉन्ग डिसीजंस. आपने अक्सर पढ़ा होगा ना. सो दे अप्रोच दिस कंपनी IDEO. जस्ट इमेजिन, पुलिस अप्रोच दिस कंपनी IDEO एंड दे आस्क्ड फॉर अ सॉल्यूशन कि आप हमें बताएं क्या करें. सो दे केम अप विद a lot of
solutions first. उन्होंने अपने extreme cases उठाए, सारा process apply किया, पर वो बहुत सारे उन्होंने solutions निकाले. इसमें से एक solution ये था कि जी हम कोई एक जो है वो मीटर लगा दें कहीं पे और उससे उनको आइडिया होना शुरू हो जाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछें. फिर एक ने आइडिया दिया कि इस किस्म की वॉच, जैसे ये कोई स्मार्ट वॉच है, इस किस्म का वॉच हो जाए, उसको खुद ही सेंस करके उसकी इन्वायरमेंट के इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, उसकी व्हाट आर द टेम्परेचर्स अराउंड, व्हाट इज द एम्बिएंट कंडीशन लाइक, रश है, ये है, नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, नहीं है, वो आपको फीडबैक दे दे. किसी ने आइडिया दिया कि हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें कि जब भी इस किस्म का सिनेरियो, एक ड्रोन जाए वो ऊपर से सर्वेलेंस कर रहा हो, एंड देन दैट कैन गिव सम फीडबैक. Eventually they chose this sort of a device, handband type of a device, which gave them the feedback that there is some danger, sense of danger. So अब उसकी viability को अगर मैं पहले देखना शुरू कर दूंगा या उसकी feasibility को पहले चैलेंज करना शुरू कर दूंगा, तो वो कभी भी मैं solution पे नहीं आ सकता था. पहले तो आपने identify किया which is the most effective solution. Now let's try to convert that solution into a practical, applied, feasible, offering. कि वो अब उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी वॉल्यूम्स क्या होंगे, उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है, उसकी डिजाइन क्या होगी, उसकी स्पेक्स क्या होंगे, that comes later. So अगर if you following that systematic approach, you will most probably end up in the desired stage only things which are which have incorporated the factors of the environment. So that's how this iterative approach would come like. लेकिन अगर आपने शुरू में ही टीम अपनी बहुत ही लूज बनाई हुई है, उसकी जो पहली स्टेज थी, जो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे आके, आइडियाज जनरेशन की, वो बहुत लूज बनाई हुई है. आपने प्रॉब्लम फॉर्मिंग स्टेज पे ज्यादा इम्पैक्ट फोकस नहीं किया है, टाइम नहीं लगाया, आपने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है, then obviously the solutions that you will come out, maybe for the sake of desirability or from that lot, can be desirable, but practically desirable नहीं होंगे. So please, हर एलिमेंट को, इस फेज की हर एलिमेंट को अगर आप सही तौर पे करते जाएंगे, प्रोफेशनली करते जाएंगे और साइंटिफिकली करते जाएंगे, इस स्टेज पे जहाँ पे आपने डिजायरेबिलिटी को सॉल्यूशंस की बेसिस पे सॉल्यूशंस को फिल्टर आउट करना है, you will most probably end up with feasible solutions. I hope I was able to answer that. Can I move forward, please? Yes, sir. Okay. Now, there are two kinds of processes people argue in design thinking, that it's a linear process or it's an iterative process. Commonly it is described, मतलब जो factor है वो ये कि एक linear process है, but it is actually an iterative in nature. I think Tom Burton नाम है इसका, जो IDEO के CEO है, वो ये कहता है कि यार ये जो पूरा design thinking का process है ना, it's like just like a toolkit, and in that toolkit you have to pick and choose the one that is the right for you. So when you look at it as a snapshot, it looks like a linear process, but you are hopping in practicality, in reality, and I'm telling you because of my own experience through it, you're hopping between various phases at various times. And that comes with skill, that comes with practice, that comes with scenarios, and various other factors. But when you look at it in a snapshot, you can define it in these two sort of hill shape patterns. 3 stages. पहला सबसे important है inspiration stage. This is the stage जहाँ पे आपने problem forming, जहाँ पे team selection, and then coming up with ideas, wild ideas initially. तो अगर आप देखें, मैंने नीचे लिखा हुआ है converging and diverging twice. So your thought process is converging first, is diverging first. पहले आपका divergent है, यानी कि आप totally मतलब you're just free. It's just like a free flow. Initially, you might get hundreds of ideas, thousands of ideas. You're just filtering those down. So obviously, the idea is not to get thousands of ideas. The idea is to get reasonably narrowed down ideas. But you will only be able to get those if you have picked the right people. Extreme cases, आपके chances
to get the right solutions, and few ones will improve. The maximum आप ये रखें कि हर चीज़ के लिए maximum 15-20 opportunities आपको नजर आए, इससे ज़्यादा ना जाए. So that's a divergent one. So within inspiration state, first you diverge and then you converge again, and you start filtering it down. कि यार ये इसमें से जरा eliminate करो, जो मैंने आपको पहले पिछले दिखाया था ना, कि desirability factor के basis पे just eliminate those and come up with like 5, 7, maybe 6, ideas, 6 opportunities. Now then you start with the ideation. कि now the opportunities you see कि यार ये areas पे हमने focus करना चाहिए, और मैं आगे जो end में HBL के context में आपको explain करूँगा कि हमने कैसे ये inspiration और ideation stage पे को apply करके चीज़ों को focus करा, तब आपको 100% relation correlation मिलेगा इस चीज़ के साथ कि ideation के अंदर जब आपके opportunities confine हो गई हैं, उन opportunities को materialize करने के लिए क्या ideas हो सकते हैं, क्या solutions हो सकते हैं. So this is the solutioning stage. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे बोलूं कि जी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मेरी सेल्स इस एरिया के अंदर कम हो रही हैं और मुझे थ्रूपुट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इफ दैट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. नाउ आइडिया विल बी कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ. क्या मैं अपनी फ्लीट बढ़ा दूँ, सेल्स फोर्स बढ़ा दूँ, क्या मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लूँ, क्या मैं अपनी प्रोडक्ट के जो मिक्स है उसको चेंज कर लूँ. सो दोज आर वेरियस आइडियाज दैट विल कम अप which will help you link with that opportunity that you had identified in the inspiration stage. And third is the implementation stage where you are converging further. Once you have let's say आपने 3-4 आइडियाज आइडेंटिफाई कर लिए कि इन आइडियाज के थ्रू हम जो हैं वो एड्रेस कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब आ जाएगा प्रोटोटाइपिंग स्टेज और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, where you will start picking up 1 or 2, prototype them, see the results, validate, going back to your original hypothesis, and then implement those. So there is a converging and diverging happening in this process twice. तो इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कहते हैं कि it's a double diamond approach. Diamond shape होता है ना, so it converges and then diverges, similarly converges and diverges. Double diamond approach कहलाती है कि आपने ओवरऑल प्रोसेस को इस तरीके से अप्लाई करना है. सो कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, जो मैं आप लोगों से बोला था कि इट्स अ मेथड, इट्स अ प्रोसेस और अ माइंडसेट. सो वन आंसर दैट आई गॉट इनिशियली वाज दैट इट्स अ प्रोसेस. नाउ एक्चुअली इट्स ऑल थ्री ऑफ देम. इट्स अ मेथड एज वेल, इट्स अ प्रोसेस एज वेल, एंड इट्स एक्चुअली प्राइमरीली अ माइंडसेट. Now, this is the crux of it, mindset. Mindset can be divided into three, based on 3 principles. Number 1, empathy, जो मैंने आपसे बात की. Number 2, invention, which means you come up with ideas. And number 3 is iteration, which means you prototype, you keep trial and error की basis पे. So design thinking में होता है कि आप एक problem उठाते हैं, उसका solution identify करते हैं, उस solution को हाइपोथेसाइज करते हैं कि यार ये मेरे ख्याल से ये वाला जो सोल्यूशन है ना, अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. फिर उसको आप प्रोटोटाइप करके वैलिडेट करते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा. सो इट्स अ ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड. बट ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो बिल्कुल लूज नहीं है, वो एक प्रोसेस के थ्रू और एक मेथडोलॉजी के थ्रू आप करते जा रहे हैं, ताकि जो भी आप ट्रायल एंड एरर करने जाएंगे या प्रोटोटाइपिंग करने जाएंगे, चांसेस विल बी दैट इट विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट. So that is why these 3 principles are critically important, and that mindset is important. ये वो mindset है जो कि एक डिजाइनर का होता है. अब डिजाइनर could be anyone. डिजाइनर एक वो फाइन आर्ट्स का इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट डिजाइन जिसने पढ़ी हो वो भी हो सकता है, डिजाइनिंग जिसने पढ़ी हो वो भी हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हो वो भी हो सकता है. सो ये जो डिजाइनर्स होते हैं ना हमारे, वो उनके ये तीनों पार्ट, उनको ये तीनों ट्रेनिंग कराई जाती हैं, तीनों चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं. एम्पैथी, इन्वेंशन एंड इटरेशन. एंड दैट इज व्हाई दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग, बिकॉज ये बेस्ड इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर है. सो इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई एम कमिंग टू माय लास्ट स्लाइड फॉर द फर्स्ट सेक्शन, कि आपकी
एक deadliest team क्या होनी चाहिए, यानी कि the most ideal team that will help you in coming up with the best solutions through design thinking approach. So based on our experience, my experience, there will have to be 4 sort of individuals or traits. इसमें मैंने तस्वीरें डाली नहीं है just for the sake of it, but ये traits आपको चाहिए अपनी टीम के अंदर. Number 1, so it's going to be a collaboration. Collaboration between whom? Between designers, somebody who has studied design, who knows, who's trained in designing. एक वो element होना जरूरी. दूसरा है social scientist. Could be an anthropologist, could be anybody who has studied social sciences. Somebody who can empathize, जिनको empathy सिखाई जाती है from day one. Politician maybe, political science background. So these are the people you need. Similarly, business, जो आप हैं, आपके institute के लोग हैं, हम लोग हैं. People who will come up eventually with the viability and the feasibility part of it. Study data. And engineers. Engineers का मतलब ये नहीं है कि उस engineering से मतलब somebody who's technical. So अगर मैं बैंक एग्जांपल दे रहा हूँ तो बैंक में कौन होगा? जैसे मेरी टीम के अंदर I am myself an engineer. We have people from business background. We have people, I've hired people from design, pure design. Indus Valley से मैंने लोग हायर किए जो कि डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं टेबल के ऊपर. इसी तरीके से सोशल साइंटिस्ट, somebody who's been on research, market research के जो लोग होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी या इस किस्म की सोशल साइंसेज उन लोगों ने पढ़ी होती है, statistician होते हैं. So these are the people, not statistician in the sense that the mathematical statisticians, but people who do research. And those are the people that you bring in as a team that will empathize and work with the end users to come up with the best solution. So ये अगर आपके पास 4-5 किस्म की traits हैं टीम के अंदर मौजूद या skill sets मौजूद हैं, then you'll be able to come up with better solutions. So in your career or in your organizations, in your jobs, आपको ideal situation तो नहीं मिलेगी. So आपको proxies ढूंढनी पड़ेंगी. यार इससे मिलते जुलती प्रोफाइल मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है, इंटरनली मिलेंगी, एक्सटर्नली मिलेंगी, या वो रोल्स आपने खुद प्ले करने होंगे. अक्सर प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको वो रोल्स प्ले करने पड़ते हैं because you may not be able to get all the resources yourself. और वो रोल्स जो हैं वो आप उसी वक्त प्ले कर सकते हैं जब आपको इनके ट्रेड्स का पता होगा, इनकी स्किल सेट्स का पता होगा, और वो उसकी आप प्रैक्टिस करें. यानी कि अगर आपने डिज़ाइनर के तौर पर सोचना है तो एक डिज़ाइनर कैसे सोचता है उसकी प्रैक्टिस करें. एक सोशल साइंटिस्ट कैसे बिहेव करेगा तो आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ लें थोड़ा सा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना है, ह्यूमन बिहेवियर्स को रिलेट करना है. इंजीनियर्स बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, बेस्ड ऑन डाटा, उस पर कोई एनालिसिस करेगा. सो अगर मैं एक सिर्फ इंजीनियर को उठा लूँ इसमें से और बोलूँ ये पूरा सोल्यूशन बनाओ, तो वो ऐसा सोल्यूशन बनेगा जो कि फ्रॉम इंजीनियर पर्सपेक्टिव, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव बन जाएगा टोटली. इसी तरीके से मैं अगर एक बिजनेसमैन को उठा लूँ उसमें से और बिजनेस ग्रेजुएट को उठा लूँ, उससे बोलूँ पूरा आप डिज़ाइन करें एज बिजनेस ग्रेजुएट और अ बिजनेस स्टूडेंट, वो उसको बिल्कुल ही एक वायबल फीजिबल पर्सपेक्टिव में लेकर आ जाएगा, डिजायरेबल हो या ना हो. So all these elements play an important role, and a good design thinker will try to have some part from all of these personalities together into his or her personality. So that's the deadly combo, in my opinion, which is going to help in executing design thinking concepts. So now I would like to spend the rest of the time on one of the applied cases in HBL, and हम इस पर discussion करेंगे. Obviously, I can't put up slides around it, but मैं इस पर पूरा discussion आपको करके बताऊंगा कि कैसे हमने apply किया. But before I do that, is there any question or is there any comment or feedback? Please feel free. So the No. topic we So- talked about, Sorry? the quote you shared of Thomas Edison, Albert Einstein, I guess it was. So I'm unable to hear. I'm unable to hear you. Please, can you come closer to the microphone? The quote you discussed about of Albert Einstein, he was saying like I spend most of the time on problem identifying and like very least amount of time on
a solution. The research study I was studying a few days back, it was a study basically done on electrical engineers and mechanical engineers and others. Like there was comparison between novice design thinkers and expert design thinkers. So what was the, this isn't basically a question, it's kind of a contribution. Like what they, like found out that novice like design thinkers were spending most of the time on problem identifying and less of the time on solutions. And the expert designers were, like spending least amount of time on problem solving, and they were actually, like spending most of the time on solving that problem, like creating solutions, creating different prototypes and testing those prototypes. If they were felt they were coming up with something new. So what was like, what design expert design thinkers do? They spend most of the time on solutions rather than identifying the problem and just sticking, like that fixation behavior. Well, I get your point. Sorry, आपका नाम? Anas. Anas साहब, thank you so much for your contribution. I get your point. देखें, an expert design thinker was once a novice design thinker, and that's why he or she became an expert. But the point that I was trying to make over here, Albert Einstein was one of the individuals who was very humble about his achievements and about his, the world knew about his intelligence, but he was himself very humble about it. So obviously, वो ये कहते हैं कि यार, I am going to spend, still being the most expert person in his own field, he will still spend more time on identifying the problems, because once you are identifying the problem properly, you most likely are coming to the conclusions directly. With practice, अब जो design thinking को pursue करते हैं as careers, with practice, they know exactly कि यार वो वाली situation पहले कहाँ exist करती थी, similar situation कहाँ थी, और उस scenario में उन्होंने क्या result निकला था. So जैसे मैंने कहा था, it's a linear process, but it is mostly an iterative process. So you keep hopping between various stages depending upon your level of expertise. So if you're an expert, you most probably will follow the process, but you know exactly यार इसमें से इसको converge कितना करना है, diverge कितना करना है. तो diamond का जो shape है वो कितना flat होगा, कितना बड़ा होगा, ये expertise के साथ और with experience आता है. So I take your point. I think it's a valid point. It's one of it's a school of thought. I hope कि आप भी किसी दिन जो है वो expert design thinker बन जाएं और वो जो diamonds बनने हैं वो flattish हो जाएं. So thank you so much for that contribution. Now, anything else before I move to? Sorry to interrupt. You talk about limited resources and creative solutions in the beginning, and then you were talking about user-centric design, and you were focusing more on desirability first, then going for feasibility and viability. So if we see like if we see what people usually do is they limit a budget, they look at the feasibility and viability first and then go for desirability. So isn't it a right way to nurture creativity, that if you are limiting the resources by doing feasibility and viability first and then going for desirability? देखिए, मैंने आपको explain किया कि if you want to apply a pure design thinking approach, then you have to follow a certain methodology. But if you want to apply a fundamental or a traditional analytical approach, that's the way our organizations are always tuned, and that's the way our organizations are always will generally behave, unless and until design thinking is actually incorporated in their DNA. अच्छा, अब डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो हैं वो बिल्कुल ही आउट हो जाएं. सो वंस यू आर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यू ऑलवेज कीप दोज कंसिडरेशंस इन माइंड. सो जब मैंने आपको कहा था ना कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो इफ आई से दैट व्हेन यू हैव टू चेंज अ प्रोसेस, you have to define yourself कि यार I will change the process in a way that I don't have to involve any technology. So if the problem is stated in front of all the entire team, that you have to come up with a solution, and you don't have to change the system. So you come up with a process primarily instead of replacing a system. मैं आपको बैंक के अंदर एग्जांपल देता हूँ
कि जी अगर हमने कोई चीज़ सही करनी है और मैं ये बोलूँ कि यार आप इसको सही कर दें और दुनिया का बेस्ट सिस्टम उठा के ले आएँ और इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो तो कोई डिज़ाइन थिंकिंग ना हुई ना, वो तो कोई अप्रोच ना हुई। बट अगर मैं ये बोलूँ आपको कि यार ये आपने चेंज करना है और इस चेंज को आपने थ्रू प्रोसेस एड्रेस करना है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी सिस्टम, major system change, or you will not going to mingle sorry, you're not going to play with any tools that we have, but you will change the process, come up with a process. So the team will sit and will try to come address the solution through the process only. So the problem forming जो stage है ना, that is why I'm focusing on कि जब आप problem form कर रहे होते हैं उसी वक्त आप constraints जो हैं वो उसमें inbuilt कर लेते हैं। जब आपका स्कोप डिफाइंड है, इनबिल्ट है आपके, आपने कहा बजट्स नहीं है, so let's say we have to come up with a solution which is based on a limited budget, whatever that amount is. So your entire thinking or solutioning will be around that budget. अब उस बजट में रहते हुए आपने वो solutions निकालने जो desirable हो, not from your perspective but perspective of the user. And that's why majority of your time has to be spent on problem forming and problem scoping. The best you do that, the rest of the journey becomes just easy. Thank you. All right. Thank you. Anything else, Ji, before we move to the test case? Please go ahead. All right. ये देखें, हमारे बैंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, रोज हो रही होती हैं, चेंजेस आ रहे होते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हो रही होती हैं. बट आई पिक्ड अप वन टॉपिक विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, विच इज़ वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके टाइम्स में जब आप, आई डोंट नो वेदर यू आर ऑल ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर और नॉट, बट इफ़ यू आर, यू वुड अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस इस वक्त बैंक का, ये जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज का, डिजिटाइजेशन के ऊपर हो रहा है. एंड द आइडिया इज़ कि हम अपने काउंटर्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं और उनको मूव कर सकते हैं टू अदर ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स. सो प्रॉब्लम ये था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, वी स्टार्टेड अर्ली दिस ईयर, January 2020, when I was given this problem कि we have to move our transactions from the counters to our alternate delivery channels more aggressively. Okay? पहले भी हो रही थी, पहले हमारा रेशियो ऐसा था कि इट वाज 50-50, यानी कि अगर 50% ट्रांजैक्शंस मेरे काउंटर पे हो रही हैं तो 50% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारे अदर ऑल्टरनेट चैनल्स पे होंगे. अदर ऑल्टरनेट चैनल्स मीनिंग ATMs, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग एंड आर ब्रांचलेस कनेक्ट एजेंट्स, यानी कि जो ब्रांच के बाहर, ब्रांच के अंदर आए बगैर लोग अपनी सर्विसेज को पूरा कर सकें. सो ये 50-50 का रेशियो था. When we were given this problem, we had no idea कि यार इसको मतलब कहाँ से स्टार्ट करें. And I'm coming from operations perspective. So we had no data कि यार कितना टारगेट होना चाहिए आइडियली, कौन सी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से हम इन लोगों को मूव कराएंगे नहीं कराएंगे. So the first step we did was obviously I have a team, तो वो मेरे पास टीम जनरली अवेलेबल होती है. So we looked at the basic trend, basic data. हम ज़्यादा हमने नया डाटा बनाना नहीं शुरू किया उस पर, यार ट्रेंड्स क्या है, क्या नहीं आ रहे, क्या होना चाहिए. And then we got the users selected कि यार हमारा यूज़र कौन है, क्योंकि ब्रांच काउंटर के अंदर तो टेलर है, तो टेलर ने ये चीज़ें मूव करवानी है. फिर इसके अलावा हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैं ADCs की बात करता हूँ, हर ADC का अपना एक चैनल ओनर या एक प्रोडक्ट ओनर है, वो हमारे ये हैं स्टेक होल्डर्स. सो इन सबको इकट्ठा किया हमने, इन सब के साथ बैठ के डिस्कशन किया. पहले तो प्रॉब्लम को स्टेट किया. तो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि द प्रॉब्लम इज़ दैट वी नीड टू address those transactions, और मैं इसमें आपको restraints constraints डालता चला जाऊंगा, those transactions which are migratable transactions. क्योंकि काउंटर के ऊपर, हमारे बैंक के काउंटर के ऊपर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो किसी दूसरे ADC चैनल के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है.
तो मैं अगर एक फ्लैट टारगेट दे दूं अपनी ब्रांचेस को, यार आज वो 50-50 है, उसको कम करके आप 65-60-40 पे ले आए, it will never happen. So we had to give constraints. Okay, we have to move the transactions, but the next constraint is we have to move the migratable transactions. Only those transactions which can move, which can go to the other alternate delivery channels. Number one. Second constraint, we had to move also those transactions eventually which has the potential to go to the other ADCs. कि आज वो मैंने ADC पे नहीं डाली हुई या उसको एलिजिबल नहीं किया है, that does not mean कि जिंदगी भर वो ineligible ही रहेगी. So we need to work in moving even those transactions which are not currently available on ADCs. Also, we need to add that. That was the second constraint. Third constraint, we need to have the migratable transaction mix by the end of this period by around 60-40. That was the other constraint that we put in. Another constraint, we had to change the pattern of the transactions happening on our ADCs also, which means कि हमें preference देनी है कि mobile app number one, number two is connect agent, number three is connect agent से मुराद है हमारे branchless agents, and number three is ATM. ये मजीद constraints आनी शुरू हो गई. With those constraints and there were a few others, and with those constraints in mind, we had to come up with solutions. We have to come up with a list of things that required to be done and have to be iterative in nature. So वो converging होती गई, पहले वो सारी चीजें हमने की, फिर हमने उसको select किया with the help of a scoring model, with the help of user interaction, with the help of our other stakeholders. Here, what are practically what are the best solutions that we can pick up first and start implementing those and changing those. So हमने एक आइटम दो आइटम्स उठा के शुरू कर दिए. For instance, how about we incentivize our tellers at the counters for migrating those transactions? अभी आप टेलर के पर्सपेक्टिव से सोचें, HBL के पर्सपेक्टिव से सोचें. आई डोंट नो आप लोगों का कितना पाला पड़ा है HBL से नहीं पड़ा, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारे काउंटर्स भरे होते हैं लोगों से ब्रांचों के अंदर, एक के ऊपर एक इंडिविजुअल जो है लाइनें लगी होती हैं लंबी लंबी, और वहाँ पे हमारे टेलर्स के पास इतना मैकेनिकल काम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को देखे और फिर मतलब कोशिश तो करता है पूरी कि और वो एक्सप्लेन भी करे कि यार सर ये वाली ट्रांजैक्शन तो आप हमारे फलाने ADC पे भी कर सकते हैं और दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं. So we thought कि यार how to incentivize them, how to motivate them. So we identified 2-3 elements. Number one, 2-3 opportunities. We identified 2-3 opportunities. Incentivization could be an opportunity. Number two, training. Proper training would be another opportunity that we need to fix on. And number three, the availability of literature for them to convert any customer. ये पहले 3 एलिमेंट्स मैं आपसे पहले उस पर बात कर लेता हूँ. ये हमने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की, यहाँ पे हम कन्वर्ज कर गए या दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. ये इंस्पिरेशन स्टेज थी हमारी जो यहाँ पे तकरीबन कंक्लूड हो गई. अभी एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. अच्छा, फिर दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है यहाँ से जब आप आइडिएशन की तरफ जाते हैं. ओके, हाउ टू इंसेंटिवाइज. दिस इज अ बिग साइंस बिकॉज incentivize some place like HBL where you're talking about 15,000 operation staff. So we need to come up with methodologies कि इनको incentivize कैसे किया जाए. उसके मुख्तलिफ discussions हुए कि इनको हम target देते हैं, target based करें, mix based करें, data हमारे पास ज़्यादा available नहीं है, किस basis पे measure करेंगे, measure कैसे होगा. So we came up with solutions in ideas कि यार this is the way we can incentivize. So we listed those down, and then we tested them, prototyped them with the users. जो हमारे टेलर्स हैं या ब्रांच का स्टाफ है उनके साथ हमने इसको टेस्ट किया कि यार हम इसको 15 दिन 1 महीना टेस्ट करते हैं इस iteration को and come up with solutions is working or not. So there were like 4 or 5 cycles of iteration we had to do. Sometimes we had to change it during the month only. Sometimes we had to change it after a month. And now, after a long period of time, we have come up with the most optimal sort of a iteration that this is in order to address the incentivization, this is the methodology. Similarly, training. कि लोगों को हम ट्रेन कैसे करें यार, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा.
And remember, the period that I'm talking about जो roll out का उसमें सब कोविड आ चुका था, ठीक है। तो अब काफ़ी अरसे तो अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत खुला हुआ है, लेकिन शुरू में तो टोटली लॉकडाउन था और हमारे जो फॉर्मल तरीके थे ट्रेनिंग के वो हम नहीं कर सकते थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे। सो वी इवन इन दैट ट्रेनिंग सेंस वी हैड टू कम अप विद सॉल्यूशंस कि यार अब इनको ट्रेन कैसे करें। द टीम यूज्ड टू सिट इंटरैक्ट, यार अब इसके ऑनलाइन बनाओ, इसके व्हाट्सएप वर्जन्स बनाओ, इनके वीडियोस बनाओ। So that team that I had, since they had designers in it, they had multiple people in it, they were able to come up with small packets of information for people, for our users on which can be transferred through WhatsApp, through email, etc., etc. And that worked. उसके 2-4 साइकिल्स हुए और वो इतनी इन्फॉर्मेशन बन गई कि अब हमें पूरा पोर्टल बनाना पड़ गया अपनी इन्फॉर्मेशन का कि यार you want to understand anything, just click on it, you'll get all the information. So we addressed the training part. We ensured that the entire network monitors also that training is done properly or not. And number 3 was the availability of literature uh, uh, that was for customers that were visiting in the branches. In the COVID, जब लॉकडाउन हुए हैं हर जगह पे बहुत सारी हमारी ब्रांचेस बंद थी। अब कस्टमर आ रहा है ब्रांच पे और ब्रांच के ऊपर ब्रांच के अंदर ही नहीं आ सकता, फॉरगेट अबाउट एडीसी पे उसको ट्रांसफर करना है। तो उनके लिए फिर हमने कैंपेन्स बनानी शुरू करी कस्टमर्स की, और हमने ऐसे लिटरेचर बनाया जो कि ब्रांच के बाहर हमने डिस्प्ले किया, ब्रांच के बाहर लोगों को खड़ा किया एज सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना ग्रीटर, मीटर ग्रीटर, बट वो ब्रांच के बाहर खड़ा हुआ है और उन्होंने वहाँ पे कस्टमर्स को गाइड करना शुरू किया जो भी वॉक इन आ रहे थे कि सर ये लिटरेचर है, ये आप ले जाएं अपने साथ, आप अपनी ट्रांजैक्शन घर बैठे ऐसे ऐसे तरीके से कर सकते हैं, ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी कनेक्ट एजेंट के पास जा सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। सो दे वर लाइक 100 items, a list of 100 items that we built around this project, this mega program, which was done through various cycles of design thinking, and it keep on happening. अब ये मैंने 3 एस्पेक्ट आपको बताए हैं। इसी तरीके से मैं अगर एक एक एडीसीज को उठा लूँ कि हाउ टू इंश्योर, एक आइडिया हमारे पास ये भी आया कि जो हमारे एटीएम्स का नेटवर्क है उसमें हम उसकी द प्रॉब्लम वाज हाउ टू इंक्रीज इट्स एक्सेप्टेंस as an ADC for the customer. So ATMs के अंदर आपको अपनी ट्रांजैक्शंस का फ्लो क्या रखना है, उसको कैसे बेहतर बनाना है, आपने ATMs के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको उनकी प्राइसिंग में किस तरीके से रोल प्ले करना है कि पीपल आर इंसेंटिवाइज, इनके कस्टमर एंड कस्टमर्स आर इंसेंटिवाइज समहाउ टू यूज ATMs मोर, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो अभी ATM पे नहीं हो रही हैं वो उनको आपने लेकर माइग्रेट करवाना है ATMs के ऊपर। तो पूरी इसकी एक वर्क स्ट्रीम जो है हमारी निकलनी शुरू हुई फ्रॉम फॉर ATMs ओनली। इसी तरीके से जो कनेक्ट एजेंट है हमारे जो ब्रांचलेस एजेंट हैं, तो हमने पहले इसको आइडेंटिफाई किया, वी हैड ऑलमोस्ट 35,000 एजेंट्स ऑल ओवर टू द कंट्री, हर जगह फैले हुए। अब जब हमने स्टार्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट के, यार 30 हमारी अपनी 1700 ब्रांचें हैं, मैं 35,000 एजेंट्स भी इनके साथ टैग कर दूंगा, हाउ गोइंग टू वर्क, हाउ विल वी नो कि कौन सा कस्टमर कौन से एजेंट पे जाकर उसने ट्रांजैक्शन की नहीं की। सो व्हाइल वी वर डिजाइनिंग एंड आइडिएटिंग, वी केम अप विद द सॉल्यूशन दैट लेट्स स्टार्ट विद 5,000। वी कैन नॉट डिजायरेबिलिटी वाला पार्ट कि one desirable solution was let's start with those 5,000, just 5,000 agents, and tag some of with each branch some of the agents which are close by that branch in a kilometer or one or 2 kilometers range, depending upon where the branch is. तो हमने अपने आप को लिमिट करना शुरू किया कि यार let's start with that rather than going all over the place, let's start small and something which is manageable. So इस साल हमने कोई 5-6 हज़ार के करीब एजेंट्स को टैग कराया। फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आया कि जी एजेंट्स ब्रांचें कहने शुरू हो गई कि यूजर्स हमारे हमें फीडबैक दे रहे हैं कि जी मेरा एजेंट बहुत दूर है, वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट हाउ आई ट्रांसफर माय एजेंट टू दोज माय कस्टमर टू दोज एजेंट्स। सो वी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस अप्रोच ओनली कि यार व्हाई डोंट, देयर वर मेनी आइडियाज। एक आइडिया ये था कि आप सारे एजेंट्स को दोबारा टैग कर दें उनके साथ, तो कस्टमर कहीं भी कर ले जाके ट्रांजैक्शन, बट उसका प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी भी ट्रैक नहीं कर सकूंगा कि मेरे किस ब्रांच के कस्टमर ने किस जगह पे जाके किस एजेंट पे जाके ट्रांजैक्शन की है और उसका बेनिफिट किसको जाना है। आई विल नेवर बी एबल टू मेजर इट। सो इट वाज
So what we decided? We decided, why don't we tell branches to open a new agent, which they feel and they are comfortable with, next door. कोई किरियाने की शॉप है, कोई और शॉप है, कोई grocery shop है, कोई anything that they want. And that's what happened, that we started. But how to do it? We gave branches a target कि अब आपने 5 agents, 10 agents, depending on the branch, नए ऐड भी कराने हैं, ताकि आपकी ये शिकायत भी ना हो कि कस्टमर को दूर जाना पड़ता है, आपके नेक्स्ट डोर है वहां भेजें. So I'm just saying, with one idea, which was just a vague idea initially, कि आपने ADCs पे अपनी चैनल माइग्रेशन करनी है, ब्रांचेस पे काउंटर पे ट्रांजैक्शन कम करनी है, ताकि हमारा रश जो ब्रांचों में वो कम हो सके, हम ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें अपने कस्टमर्स को हैंडल करने में. इन द ब्रांच हमारा बहुत रश होता है. That was the only tagline that I got. And then from there, we worked towards and actually, expanding it into actionable plans, into ideas that were acceptable by all and everybody. एक प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी है और दूसरों में भी आता है, वो ये कि डिज़ाइन थिंकिंग अगर है भी, या अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी टीम इस पूरे चीज़ को हैंडल कर रही है, वो एक लिमिटेड टीम होगी ना, 3-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जो इसको देख रहे होंगे. But when you talk about problem forming and team selection and your user feedback, we have got a huge canvas to cover. और वहाँ पर हमें ये challenge आता है कि everybody is doing their day job. We can't pull them out and park them into a team, into a project for X number of days or months, because otherwise our BAU will get hurt. वहाँ पे हमें challenge आता है कि अब हम उसको कैसे address करें. And with the help of the Zoom now, it's been very effective. हम सबको कॉल पे ले लेते हैं, breakout rooms बनाते हैं, काम assign करते हैं, और they come up with brainstorming होती है. They define the problem, they come up with possible opportunities, and once they have come up with the opportunities, then with them we try to converge them into practical ideas. So ये थोड़ा सा आपको improvise करना पड़ता है. Ideal scenario किसी भी organization में कभी भी नहीं होता. So that was one case that I thought I would share with you, because that really changed our perspective of channel migration. और उसका result ये निकला है. I'll share the result with you. As of now, within like 9 months, 10 months, our ratio has gone down from 50-50 to 60-40. And when we talk about 10%, we are talking about 8 to 10 million transactions. 8 to 10 million transactions have been diverted or migrated to these alternate channels. What is that resulting for us? I have created additional capacity in the branch now to handle either more business or get more nimble. Sorry, I should not use the word I, we. We have created additional capacity now, which means that now I can start thinking that, मेरे अब एक्स्ट्रा कैपेसिटी कम हो गई तो या तो मैं बिजनेस बढ़ा दूं ब्रांच के अंदर, बट अगर मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा ब्रांच के अंदर, अगेन रश हो जाएगा, we'll be in the circle again. Or I should think of reducing my staff in the branches or my branches altogether. So these are the ideas that are coming in our mind now. Based on that saving that we have created, we have addressed a problem. Now there are alternate opportunities that are rising and we need to leverage on those. So with that note, I'll end my session today. And if you feel to ask anything, what we have discussed today, please feel free to throw your questions to me. Thank you, Faisal sir. Questions that you have to please go ahead. Who's get the good question? Nothing? Was I too boring? Sorry, I'm unable to hear. So typing the food.
So you talked about incorporating those users. So आपने बैंक के members को लिया. These are the one side of the extreme users. Like what about the other sides of the extreme users that you like? Those are not the frequent user or ADC channels. नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि when we were doing the problem forming and the team formation stage, we picked stakeholders from all segments of the bank, which means primarily the users, which are the tellers. उसमें हमने extreme cases उठाए थे. Plus उसके अलावा जो हमारे दूसरे stakeholders थे ADC channels के product owners होते हैं, हमारे product managers होते हैं. Those are the people who drive those channels. जैसे ATM का एक प्रोडक्ट मैनेजर है, चैनल मैनेजर है, इसी तरीके से कनेक्ट टीम है, कनेक्ट टीम के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं. तो आप इन अदर वर्ड्स यू शुड थिंक इफ आई बिकॉज वी कांट कंडक्ट design thinking session of 150 people at one point in time, it would be futile. So we break them down into expertise. So let's say if you're talking about how to incentivize टेलर्स और ब्रांच स्टाफ, सो वहाँ पे मुझे जो यूजर्स चाहिए वो ब्रांच के लोग चाहिए, वो ब्रांच का स्टाफ चाहिए, टेलर्स चाहिए, तो वहाँ के एक्सट्रीम केसेस उठाऊंगा मैं. बट इफ आई एम सेइंग यार हाउ टू इम्प्रूव ट्रांजैक्शन ऑन एटीएम्स और कौन सी नई ट्रांजैक्शंस को लेके जाना है वहाँ पर, तो उधर मुझे जो मेरी सिलेक्शन होगी वो कुछ ब्रांच के लोग होंगे, जैसे उसमें ब्रांच ऑप्स मैनेजर होगा, और ज़्यादातर लोग जो हैं प्रोडक्ट टीम के होंगे जो कि प्रोडक्ट को समझते हैं कि, और वो फिर मुझे अपनी लिमिटेशंस बताएंगे. Our limitation is that we can't add this transaction on this channel because of either regulatory nature or because of other technical issues. So वो constraints हमारे सामने आती जाएंगी. तो जब वो constraints आएंगी इनकी feedback से, तो solutioning हमारी जो problem forming है ना, वो बड़ी solid हो जाएगी. कि यार this is the problem, we have to address this problem provided we keep all these constraints in mind. And then the solutionings and the opportunities identification will start happening. So वो आपने across the board सारे हर किस्म के यूजर को टच बेस करना है to the best of your ability. जो कस्टमर्स उनको आपने पिक किया, तो people who were coming to the branch, people who were using नहीं, very good question. We didn't pick up the customers for this project, for this, but उसके अंदर हमारी कुछ वर्क स्ट्रीम्स थी जिसमें हमने पिक किया. फॉर दीज वर्क स्ट्रीम्स के हमने इंसेंटिवाइज करना है, फॉर इंस्टेंस आर इंटरनल स्टाफ, उसके लिए हमने कस्टमर्स को पिक नहीं किया बिकॉज वो यूजर्स नहीं थे उसके अंदर. बट फॉर इंस्टेंस कि जी मैं कस्टमर अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करवाना है थ्रू लिटरेचर एटसेट्रा, वहाँ पे हमने फीडबैक लिया फ्रॉम सम ऑफ द कस्टमर्स. डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को हम जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा लूज स्टेटमेंट सा आया था हमारे पास, एक वेग सा आइडिया आया था कि ये काम हमने करना है, और उसके कोई 100 के करीब हमारे पास एक्शनेबल वर्क स्ट्रीम्स बने थे, और हर वर्क स्ट्रीम का अपना एक समझ लें डिज़ाइन साइकिल से गुजरना पड़ा उसको. Anything else? इतनी खामोशी क्यों है आपकी क्लास में? बहुत सख्ती होती है या? So I could see a lot of people, a lot of other students online as well. There are 6-7 of them. Are they the same one? या इसी क्लास में से लोग ऑनलाइन हुए हैं या इसके अलावा आएंगे? जी इसी क्लास के हैं, and so but they are attending online. अच्छा, they are attending online. सवाल है आपका शर्मीन? जी अगर है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. No sir. No sir, not as yet. All right. So thank you very much. मेरा एक सवाल है. I have a question. Kamran. So basically you have been talking about mashallah HBL में काफी काम हो रहा है. So I see a lot of people engaged in the exercise of designing the user experiences. तो उसमें can you talk about a little bit about कि आपका जो उसका structure है वो कैसे काम करता है? So I know कि you have a chief innovation officer, फिर आप हैं, फिर user experience के लोग हैं,
कनेक्ट के साथ लोग हैं, तो हाउ डज द होल स्ट्रक्चर फंक्शन, कैसे वो काम? जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, हमारा स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बड़ा फंक्शनल किस्म का स्ट्रक्चर है, which means के जिसमें अब्रार भी साहब की आपने बात की, looks after our digital and innovation financial inclusion piece, which means that he runs a business which is primarily the branchless banking and the mobile banking, mobile app, internet banking. ये वो काम है जो वो रन करते हैं एज बिजनेसेस। एंड उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो यूएक्स यूआई इंटरफेसेस चेंजेस वगैरह इस किस्म के जो काम करने पड़ते हैं वो उनकी अपनी टीम है जो करती है। फिर इसी तरीके से मैं जो हूँ, आई एम पार्ट ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप, like I explained to you. So anything which, let's say, Abrar Saab or his team comes up, which has an impact on the branch and which has to be rolled out through a system or through some processes into the branches, which is rarely in their case, that comes to me. And हेलो हेलो, हमारी तरफ से उनकी तरफ? hello. जी फैसल साहब, वो हम लॉस्ट यू फॉर अ मिनट। Sure. So I'm just saying, is the other the group I belong to is the operations group, and within the operations group, if any new digitization or transformation needs to take place, that comes to me. For instance, हमने एक पूरा system interface change करना था अपने front end का, जो हमारे टेलर्स और ब्रांच के स्टाफ इस्तेमाल करते हैं ऑफ ऑनबोर्डिंग की सेंट्रलाइजेशन करनी थी, पूरे जो कस्टमर को नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं इनकी सेंट्रलाइजेशन करनी थी, वो पूरे प्रोसेसेस को अप्रॉक्सीमेटली 1700 ब्रांचेस में इम्प्लीमेंट करना, उनको डिज़ाइन करना, उनको दैट इज़ माय एरिया। कोई नया चैलेंज आ जाता है फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, जैसे अभी आसान अकाउंट, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट का भी एक आप लोगों ने सुना होगा, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए शुरू हुआ है, उसकी बेसिक डिजाइनिंग जो है वो पूरे प्रोसेस की वो मेरी टीम ने और हमने की थी मिलके। एंड सो दैट्स हाउ वी स्ट्रक्चर्ड इट्स अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजिटल वाला आप कह रहे थे कि वो डिजिटल वाला इज बेसिकली टेकन केयर बाय अब्रार साहब। जी, जो हमारा डिजिटल टू द एक्सटेंट ऑफ कनेक्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ मोबाइल ऐप, yes, that is taken care of Abrar sir, but any digitalization that requires systems, that requires operations, जो हमारे अपने सेल्फ ग्रोन इनिशिएटिव्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस हम ट्रेड के ऊपर एक पूरी डिजिटलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ट्रेड बिजनेस के अंदर, जिसमें OCR बेस्ड ICR बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी और वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करके उसकी वैलिडेशन बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो डेवलप करेंगे। सो इसी ये वाले इनिशिएटिव्स हमारे ऑपरेशंस के होते हैं कि हमने अपने ऑपरेशंस को कैसे एफिशिएंट और सिंपल बनाना है फॉर देम टू गेट इम्प्लीमेंटेड across the bank and to get desired results, efficiencies creation. अच्छा अच्छा, so that's the part that you lead. I have there is a question here, I think, in the chat box from Abdul Qadir, and if you want, I can read it. It says, I don't have a question, but I think I can use your help with my research. Basically, for my final year research, I am writing a paper on how conventional banks differ from Easy Paisa and Jazz Cash. So your insight would be of great help if I can get a contact point where I can. Yeah, absolutely. बिल्कुल आप मुझसे contact कर सकते हैं. My contact details are available with Kamran Saab, and if you want, I can write down my email here. आप मुझे भेज दें, I can connect you with the right individuals in the bank. So that's my email. मैंने chat box में लिख लिया faisal.malik@hbl.com, or you can approach me on LinkedIn, etc., or maybe send me an email. सर एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास 2-3 मिनट और है।
Sure. Please go ahead. Okay, so sir, innovation and bureaucracy almost sounds oxymoron to each other, right? So I would like you to sort of Sorry. innovation and bureaucracy are sort of sounds like oxymorons to each other, like they're two extremes of the opposite ends. So I would like you to highlight the limitations one would face working in an organization, because at the end of the day, a corporation works under the principle of profit maximization, right? So you did emphasize on the fact of desirability, but I'd still think you might have to make certain decisions just because you had a certain constraint of time, budget, or I don't know, your superiors thought that a certain solution is better off, even though your report was stating otherwise. All right. May I know your name, please? Zan, Sayed Zan. आपका नाम जैन साहब, थैंक यू सो मच. देखें, आप कहीं काम कर रहे हैं? Are you working anywhere, or is it you haven't worked anywhere yet? I worked with the Dubai Port World, and I've interned in HBL as well. Okay, wonderful. Oh, so you've been part of HBL, so you would understand. देखें, पहली बात तो ये है कि I think bureaucracy is not the right word to use. The bigger the organization gets, obviously उसके लिए nimble होना और उसके लिए agile होना बड़ा एक challenge हो जाता है किसी भी organization, चाहे वो HBL हो या कोई भी दूसरी organization हो. So I would not say bureaucracy, because bureaucracy is generally used as a negative word in organization. And I'll tell you, because I've worked with many organizations in the country, and somehow I feel that HBL is one of the most forward-looking and tolerant organization in terms of any innovation that would like to introduce into the bank. It all drives from your top leadership and the vision and the values that any organization has. So हमारी organization में अल्लाह का शुक्र है कि वो values बहुत focus है achievement of mission and innovation. In fact, innovation is part of excellence, is part of our values, and our focus is extremely on it. तो जहाँ पे भी अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं होगी. मेरा आपको मशवरा ये है कि 2-4 किताबें हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो पढ़ लें. वो आपको ज़रा रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो कैसे एग्जिस्ट करना है, कैसे सर्वाइव करना है, हाउ क्रूल, हाउ ब्रूटल, हाउ कम्पिटिटिव द वर्ल्ड इज, वहाँ पे कैसे करना है, और मोरालिटी और रियलिटी को बैलेंस को कैसे लेके चलना है. So one of the books that I would recommend all of you to read is called Winning by Jack Welch. I don't know आप लोगों ने इसका नाम सुना नहीं सुना, but मैं जब अपना MBA करने के बाद मैंने पढ़ी थी, और मैं जैक वेल्च का वैसे भी बहुत बड़ा फैन हूँ, बट बहरहाल जब उसने किताब लिखी थी उसके बाद मैंने MBA किया था, तो सारी किताबें वो एक तरफ. So if we were taught just this book throughout my MBA, I would have been much better person. So that's a good read that you should study, and that will tell you about organizations, and it will tell you about what to value in what sort of organization. And also another one, which is quite controversial, but there's no harm in reading because it gives you some. There are, I think, 48 immutable laws of power. Sorry. ठीक है, तो वो आप पढ़ लें. 48 immutable laws of power. तो उसमें आपको अंदाजा होगा, and then read it in the context of your scenario and how you can apply it in whatever scenario you are in, whether in your education or in your professional world. तो वो किताबें जो थोड़ा सा आपको बताती हैं based on history, based on human psychology and behaviors, कि यार किस सिनेरियो में आपने कैसे डील करना है, and if you really want to survive. If you want to take, यार मेरे आइडिया तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो जितने इनोवेटिव आइडियाज थे वो सब खड्डी लाइन लगा दिए जाते हैं, और मेरा बॉस आके मुझे बोलता है छोड़ यार ये जो है ना बस ये वाला काम कर दे, या ये बजट है बस इसी के अंदर बस रहोगे तुम आसमान में रह रहे हो. सो अगर तो आपने उस दुनिया में रहना है
और उसी में अपने आप को कहना कि यार मैं तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादती होती है, मैं तो मिसफिट हूँ, मैं फलाना हूँ, तो you will never be able to survive in the corporate world, in the professional world. So you have to learn how to give up your thoughts also for the longer game. And similarly, you also have to find out ways that how to convince someone of your ideas, then that will benefit the organization and in totality. So वो डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम है, उनके क्या एथिक्स हैं, and you know how comfortable they are in actually bringing about innovation and creativity. So it's a different context. So there's no fixed answer. There is no yes or no answer. It depends on the circumstances, and it largely depends on the kind of organizations that you are working for. But these two books might help you in in getting the reality check and helping you to cope up with the unlikely scenarios. जो अब अभी तो आइडियलिज्म में होते हैं ना आप लोग, मैं भी था, एंड बड़ी आइडियलिस्टिक स्टेज में हूँ भी आप, कि यार ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, उसको जाके अप्लाई करेंगे और ये होगा और वो होगा, दुनिया चेंज हो जाएगी, हो भी जाएगी, बट टाइम लगेगा आपको लगाने में, उसको चेंज करने में, और पहले आपको यू हैव टू, कहते हैं ना, पुट योर फुट इन द डोर फर्स्ट, and then you have to open the door and then walk in and make your own space and then do the rest. So it's a painful and it's a very patient process that you have to go through. So read those books and you'll get some inspiration. Thank you, sir. Thank you, Faisal Saab. I think very insightful, and thank you for sharing your experience plus talking ये books भी जो आपने बताई हैं, I think they'll be useful as well. तो I think वो हमारे लिए सबके लिए and thank you everybody and thank you for IBA. जी, so pleasure having you once Thanks again, and IBA. take care जी, thank you, Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz, ख्याल रखिएगा आप लोग. Allah Hafiz.